various symmetry elements. Okay, so there might be some questions in your mind that why we have studied the various symmetry elements. Now this concept now we are applying to the chirality and of course the optical activity. Till date, in your earlier classes, what you have studied, you have only studied the chiral molecules will they give the optical activity, but later on with the several evidences in last few lectures we have discussed, no, there is the chirality is not mandatory, because some other molecules they are also they show the optical activity. For example, the stereochemistry of biphenyls, we can see they are some molecules with some molecular arrangement. They show stereochemistry, or sorry, the optical activity. Some allenes, they are also optically active, and some molecules they have chirality but still they don't show any optical activity. For example, mesotartaric acid. So these are some few example we have discussed in last few lectures. So with this we came to this conclusion that only chiral parameter is not mandatory for the optical activity. Some other parameters are simultaneously acting on the optical activity. So some other parameters means the symmetry elements we have studied yesterday. So there are five types of symmetry elements we have discussed. The first element is, what is the first element? That is the identity. The second element is the proper axis or rotational axis of symmetry. The third one is the plane of symmetry or mirror plane of the symmetry. Then the fourth is the center of symmetry or inversion center. And the fifth is the improper axis of symmetry, or yes, Alternating yes, axis of symmetry. alternating axis of symmetry. So yesterday discussing about the last parameter, that is the alternating, it is really a little bit difficult, but I hope you understand while I have explained on the tab. So did you understand that the last concept, that is, yes, improper axis of symmetry? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so now let us moving towards the next concept, that is the chiral and the achiral molecule. Okay, so you can see this slide properly. All right. Yes, Yes, ma'am. Okay, so the chiral and Yes, ma'am. okay, so the chiral and chiral molecules. This is also these topics are also in your syllabus. So we need to discuss some in more details and with some good examples and the problems also. All right. Now the chiral, till now you have a very good idea about the chirality of the molecule, but still some with the some examples like we know that stereochemistry is nothing but the handedness means the nature only recognizes the handedness, means left hand side and the right hand side. So this is the best example I quote over here. So we have a two hands, and one is a left hand side and right hand side, and we can see that they are the mirror images of each other, and they are many mirror images, they are superimposable. Okay, but the mirror images they may be superimposable or they may not. So
some molecules they are like-handed. Like-handed means they are superimposable, and some molecules they are not. So we can say that they are not identical. They are not superimposable. So this is we start about. So in this case, the symmetry element works a very important role while deciding if they are superimposable, what will be the symmetry of that molecule. If they are not superimposable, what will be the symmetry of that molecule, because the mirror images factor is the common in all the cases. All right, the only concept now remaining is that the superimposability and non superimposability. So जाहिर है कि हमें सुपर इम्पोजिबल और सुपर नॉन इम्पोजिबल के लिए हमें symmetry criteria, additionally we have to look, we have to see the symmetry criteria for those concepts. Then the moving to the next again, now yeah, can you see the socks? The socks are achiral. Now why they are achiral? Because they have some symmetry, because they are superimposable. Okay, they are mirror images, but when you put one socks on the other socks, you can see that they are exactly matching with each other. They match with each other, so they are superimposable. So if the images they are superimposable, they are achiral. They are the object, those are mirror images, but they are superimposable. देखिए ये डेफिनेशंस बार बार आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है. So mirror images and superimposability, these are the only criteria that decide whether the molecule is chiral and whether the molecule is achiral. So please remember these two criteria. They are very very important. All right. So the molecule or the object that is superimposable on its mirror image, so that is said to be chiral. And what is sorry, achiral? And what is a chiral? A molecule or the object that is a mirror image, but that is not superimposable. All right. So this is the major difference between the achiral and the chiral molecules. All right. Now chiral molecules, they are enantiomers and the diastereomers we'll see later on. But this is the prime definition of chirality and achirality of the molecule. So please remember mirror images and the superimposability. If they are non-superimposable, they are chiral. And if it is superimposable, they are achiral. So this is very important definition. So let us see some molecules and we can determine with the help of the structure whether they are chiral or not. Okay. Now, depending, as I told you, that only the chirality which is connected with the superimposability or non-superimposable is directly connected with the symmetry element. All right. Now, yesterday we have also discussed the water molecule. Now, this is the water molecule, and if you put a mirror plane or a mirror, so you are getting exactly the mirror image of the this water molecule. And if you try to superimpose them, they are superimposable with each other. Okay. If they are superimposable with each other, what does it mean? Yes. They are achiral. They are, यहाँ They're पे मैंने लिखा chiral. हुआ है, is already there, but still Achiral. if I superimpose it, if I'm trying to overlap this molecule on this molecule, what I see, all they are exactly same. All right, the bonds and the atoms, they align with each other, means they are exactly same. So that's why they are achiral.
And which symmetry element is working over here? Yesterday I told you that Sn is if the molecule doesn't have Sn, then the molecule is chiral. अंडरस्टैंड एसएन अगर मॉलिक्यूल में नहीं है तो वो कायरल है. इसमें एसएन है और मैं बोलती हूँ कि एसएन का फॉर्मूला का क्या था? एसएन इज इक्वल टू सी एन एंड डेल्टा एच. तो यहाँ पे वी नो दैट व्हाट इज द एक्सेस? C2 axis. C2. Yes. C2X. If some element, some symmetry element still present in the molecule, it is, you can directly say that no, this is a chiral molecule. So please remember, any symmetry element if present, apart from identity, of course, because we are rotating any irregular body, you are rotating around 360-degree, you can get the same phase. But apart from that identity, the rest of the four factors are very, very important. That is the axis of symmetry, plane of symmetry, center of symmetry, and the improper axis of symmetry. These are the four important factors. If anyone is present in the molecule, that molecule is supposed to be a chiral. So that this is the only criteria which we can say, and that's why you have to apply the symmetry elements to each and every molecule to decide whether that molecule is chiral or not. Understand? Yes. Yes, ma'am. हाँ, अभी डेफिनेशन चेंज हो गई है. द मॉलिक्यूल इज डिसिमेट्रिक. द डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज अ chiral molecule. This is a definition. And the molecule doesn't have Sn is a chiral molecule. Yesterday I have told you this ultimate definition. Okay, if Sn नहीं है इसका मतलब इसमें कोई भी symmetry element present नहीं है. All right, now let us move towards the second example. Now this is the second example. Can you see the second example? This is the second example of the chlorobromo. Yes, chlorobromomethane. Okay, so this is the carbon. It is connected with two similar hydrogen, one but one is chlorine and one is uh, bromine atom. Now the mirror image, you can see that. Yes, so you can have the this thing, mirror image. Now here you wrote. Now what is the symmetry element? The symmetry elements that they are superimposable or non-superimposable. So what you see over here? Now if I rotate this, any see one more thing is mirror image or any other operation makes that molecule superimposable, that is chiral. अभी हमारे पास ये जो molecule है ये इसका mirror image है. ठीक है. Now what I did, so I rotated this molecule again 180-degree and I got this is the superimposability. You got my point? ठीक है. किसी भी तरह इसको रोटेट करके अगर मुझे सुपर इम्पोजिबिलिटी मिलती है तो दैट मॉलिक्यूल इज ऑल्सो अ chiral molecule. प्लीज रिमेंबर. अंडरस्टैंड? ये समझ में आया? ये कल हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है. अगर हम इसको इफ आई keep these two molecules in the upward direction and I cut it, so I'll get a equal halves. ये याद है आपको ये मॉलिक्यूल? यस. Yes, ma'am. हाँ, सो इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है. एंड द अनदर थिंग इज इट इज अ सुपर इम्पोजेबल. अगर सपोज सुपर इम्पोजेबल है तो इसमें कोई ना कोई सिमेट्री एलिमेंट जरूर काम कर रहा है. इसे आप अच्छे से ध्यान में रखो. सो दैट मॉलिक्यूल इज अ chiral molecule. All right. Then moving to the next, how to draw the
molecule with the mirror image. How to draw the molecule with the mirror image. So this is a procedure I want to share with you. Now this is a molecule. So can you nomenclate this molecule A? So select the longest chain. 1 2 3 4. So जाहिर है ये क्या है, ब्यूटेन है. ठीक है, 2-butanol. 2-butanol. 2 ब्यूटेनॉल है. ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल है और इसमें कितने, 4 कार्बन है. 4 में से एक कार्बन जो है ये कायरलिटी देगा कि नहीं देगा. नाउ लेट अस डिसाइड, क्योंकि अभी कायरल सेंटर सिर्फ 4 डिफरेंट एटम्स ज्वाइन करने से हमें नहीं मिलते हैं. उसमें हमें और क्या चीज देखनी होती है, Symmetry elements. सिमेट्री एलिमेंट्स भी हमें देखने हैं अभी आगे जाके कि भाई ओके दिख तो रहा है connected with 4 different atoms, but at the same time we have to apply the symmetry elements. कहीं इसमें C2 सिमेट्री तो नहीं है, कहीं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रही है, कहीं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रही है. अच्छा, ये मॉलिक्यूल में कौन सी सिमेट्री एक्ट हो रही है, दोनों इसमें, एक तो C2 सिमेट्री भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है वाटर मॉलिक्यूल में. यहां पर क्या है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है बिकॉज C2 सिमेट्री इज नॉट वर्किंग. All right, because these two are different atoms. So only plane of symmetry is working over here. Now I'm going to show you the how you can draw the mirror images. All right. Now this is 2-butanol A, and we have to find out whether this molecule has this is chirality or not. So this is a 3-dimensional structure of the 2-butanol, and I put mirror, okay, and then draw the second structure. देखो अभी मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करना है ये आपको अभी सबको आता है. मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करना है, Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. जो ग्रुप यहाँ पर राइट हैंड साइड में है मिरर इमेज में, वो एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड में होता है. ठीक है. Now in this case this is the right hand side and this is the left hand side. Now in the mirror image this appears at the left hand side and this appears at the right hand side. So equatorial the vertical will remain same. Okay, so this is the exact mirror image of each other. The dash will be like this and wedge will be like this. Okay, wedge will remain wedge and the dash will remain dash. Okay, so this is the appearance of the mirror image of the 2-hydroxybutanol. Now this is of course the 3-dimensional structure of the mirror image of the butanol. Okay, now my question is, are they enantiomers? Now see, the question is very tricky because if they are enantiomers, so there will be no plane of symmetry, no element of symmetry is present in the molecule. Okay, but if they are not enantiomers, in spite of having chiral centers, तो दोनों को अभी आप देख लो कि इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट है कि नहीं, एंड गिव मी आंसर. आई एम गिविंग यू 30 seconds. Okay, so give me an answer. Yes, are they enantiomers? Yes. They are enantiomers because if you see that they are non-superimposable. What is the definition of enantiomer? Enantiomers, they are mirror images of each other. Time they are non-superimposable. So
uh, they because of no symmetry elements are working over here, all right, as they are non superimposable. So the answer is correct, that is a they are enantiomers because the mirror images are not superimposable. All right, now this is additional information regarding the molecule labeled as A and all that, whatever we have done. So A and B, they are the chiral. And one more thing is whether the chirality is there. Where is the chiral center? Yes. Carbon 2. Yes. Carbon atom. Now, these two carbons are the chiral centers. So they are also called as stereogenic centers. This carbon is tetrahedral carbon. Okay. The four different groups are present. Ethyl, methyl, hydrogen, and hydroxy groups are present. And so that we can say that this is a chiral center or stereogenic center. The one more terminology you can add, this center is also called as stereogenic center, okay, or the chiral center. All right, and these two are stereoisomers. Specifically, they are enantiomers because their mirror images are non superimposable. All right, now moving to the next molecule, that other chiral center. So this is again, so here we can say, is it a chiral or non-chiral? Okay. Oh, chiral. Oh, Chiral. 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 Oh, chiral. What is Chiral. answer? It is a chiral because no symmetry Chiral, ma'am. element is no symmetry element is present. So because it is attached to the four different groups and also no symmetry elements are present. So the another way, such centers are also called as chiral center or asymmetric center और स्टीरियो सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर. ये चारों में से कोई भी एक टर्मिनोलॉजी अगर आपके क्वेश्चन में होती है तो इसका एक ही मतलब होता है कायरल सेंटर. ठीक है, कोई कायरल सेंटर बोलता है, कोई ओसिमेट्रिक सेंटर भी बोलता है. somebody will say stereo center, somebody will say stereogenic center. All right, so these are the various terms which are used for the chiral center. All right, तो ये चारों आप लिख लो आपके कॉपी में ताकि कोई भी टर्मिनोलॉजी आए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सो कायरल सेंटर, asymmetric center, stereo center or the stereogenic center. Now moving towards the various examples. Okay, so let me tell you one more example, that is the bromo, chloro, fluoro, methane. Okay, so it is connected with four different uh, groups or atoms and no symmetry elements. If I draw, see, only what I can say, that just mere looking at the molecule, okay, that is fine. It looks like a symmetric molecule, but you can perform the operation, you can draw a mirror image and you try to superimpose the two mirror images and then find out that yes, that is a symmetric molecule, and you can get the enantiomers. Because if one asymmetric molecule is there, it has a stereo center and it may have the another isomer, and those isomer is called as enantiomer. Okay, so there is a possibility of enantiomeric isomers also. So only just looking at the chirality is not your job. Your job is you have to identify, okay, if chiral center is there, let us go for the next step. So you can find out the and whether they are enantiomers or whether they are diastereomers.
if they are enantiomers, what we are expecting? enantiomers अगर है तो हमें क्या मिलना चाहिए इसमें? Mirror image. Superimposable Non mirror image. superimposable. नॉन सुपर इम्पोजेबल. देखो, मिरर इमेजेस तो मिलते हैं, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए. एंड डाइस्टीरियोमर्स अगर हमें हमें मिलते हैं तो हमें व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर हियर? Not mirror images. हम्म. Possible mirror image. एंड एंड Superimposable. नो, दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल. More than one symmetric carbon atom. If they are distereoisomers, they don't have mirror images and they don't have any, they are non superimposable also. Okay, ये दोनों भी parameters उसमें नहीं होते, please remember. So we'll see later on by discussing various structures. Okay, so moving to the next molecule. Okay, so this is a chiral molecule because it is connected with four different. Just now we have discussed this molecule in the that we have drawn mirror image, and we got the another structure that is a mirror image, and they are non-superimposable. This is the another. See, if such a big molecules are there, so it is very difficult to find out the or to locate the stereogenic center or chiral center, all right, or asymmetric center. I am using various terms. So again, there should be a practice that you have to identify the stereogenic center is also an important task. All right. Now here you can see that there is a big chain, or you, if you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is a octane, and the other two groups are present over here. All right. So in such molecules, it is very difficult to find out the now how you can locate or identify that particular center. So that center should be a tertiary center, please remember. Okay, ये जो this carbon is a tertiary carbon connected with secondary carbon. It doesn't work because it is connected with two hydrogens. Okay, so the tertiary carbon, just locate the tertiary carbon and find out that separate the different groups which are present on that particular carbon, and um, find out whether if instead of this, if one more carbon atom is there, if one more CH2 is there, so can we say that the chiral apart from this is a tertiary carbon, can we say that it is a asymmetric carbon? No. No, because these two groups are same groups. All right. Instead of CH3, if CH2 CH3 is there, can we say that it is a chiral carbon? No, because No. these two groups are same. All right. So only mere that tertiary carbon cannot add the chirality. You have to again look for whether the attached group are same or different. All right. So again, the identification of stereogenic center is very important in a molecule if the molecules are big. Now the next molecule is the linalool molecule. Now this is a what we can say a naturally occurring molecule. Now just identify the chiral center in this molecule. Just identify it. Third carbon. So I am just numbering one. ठीक है, 1, 2, 3,
4, 5, 6। ठीक है, ये जो है ये कनेक्टिविटी हम लोग करेंगे। सो विच कार्बन इज नाउ दिस कार्बन इज कनेक्टेड विथ CH3। ओके, this carbon is connected with CH3. All right. If double bond is there, so there is a same connectivity. Means carbon is connected with C, the carbon is connected with C. All right. So double bond cannot be a chirality. इसके पास क्या है? Again there are two hydrogens. तो ये कार्बन नहीं हो सकता। ये कार्बन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कार्बन नहीं हो सकता। इसके पास क्या है? 2 हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन हो मैम सकता है? स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, आप क्या लिख रहे हो तो। कुछ भी नहीं दिख रहा है? नो मैम। नो अरे मैम, नहीं दिख राम। रहा। नहीं मैम, सिर्फ मॉलिक्यूल दिख रहा है, बाकी आपने जो नंबरिंग वगैरह किया वो कुछ नहीं दिख रहा। अब कैसे करेंगे इसको? अभी कैसे करेंगे? मुझे दिखाना है आपको तो। हाउ कैन आई राइट? मुझे इसको नंबरिंग करना है। किसी को आइडिया है इसका कैसे नंबरिंग करूं मैं इसे? यंग जनरेशन को ज्यादा पता रहता है कैसे करना है तो। मैम शेप्स में जाके देख। हाँ, शेप्स। शेप्स में कल गए थे ना आप, ड्राइंग वो दिख रहा है, देखो ड्राइंग। कहाँ ड्राइंग में? शेप्स में? शेप्स कहाँ है रे? नहीं मैम, होम में जाइए, होम में वहां पे लास्ट में ड्राइंग करके ऑप्शन है। कहाँ पर है? होम में? ड्राइंग अरेंज के नीचे देखिए, होम पैराग्राफ में? वाले जो बन। अच्छा हाँ, ये, हाँ ड्राइंग। इसी में कल गए थे ना मैम आप। नहीं इसमें नहीं गई थी मैं। मैंने दूसरा ये निकाला था। मैंने दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन किया था। मुझे नहीं आता ये, इसमें से नहीं आता करना मेरे। मैम एक शेप सिलेक्ट करके देखिए, उसमें आता होगा तो। देखती हूँ अभी कैसे, ये करके देखती हूँ। देखिए ये कुछ भी नहीं आता। वर्ड स्टाइल, टेक्स्ट फिल। देखो 2 दिख रहा है अभी। अभी मैं इसको ही करती हूँ। ठीक है, 3 दिख रहा है? दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। पर पता है कि ये उसको अगर इसकी कलम उठाते हैं ना, तो वो शेप डिसअपियर हो रहा है। तो एक ही इसमें मुझे, पर ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा। देखो आप किसी को पूछ के देखो कि क्या इसमें सोल्यूशन है। ठीक है ना? एक्चुअली मैंने फरीन मैडम से बात की तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। शी जस्ट स्टार्ट एंड मेरे इसमें ना तो पीपीटी स्लाइड शो बताता है और आई कैन नॉट राइट एनीथिंग। एनीवे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ऑलराइट। अभी देखो कि ये दोनों क्या है? CH3 है ना? ये दोनों सेम है। तो कैन वी से दैट दिस इज अ chiral center? नो। नो। No. And नो मैम। what about this? नहीं हो रहा है ये। आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट। पूरा मजा खत्म हो जाता है पता है पढ़ाने का। इफ आई कैन नॉट नंबरिंग इट, हाउ कैन इट पॉसिबल? ओके, ठीक है।
चलो तो ठीक है, अभी इतना तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग आ गया। नाउ दिस इज कनेक्टेड विथ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, जस्ट आप इसमें अपने इसमें ड्रॉ करो और उसको 2 हाइड्रोजन निकालो। तो ये भी जो है अकायरल है। और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है। तो दिस कार्बन 1 2 3 4, all those carbons they are having say, 1 or 2 more groups, they are same. So we cannot say that they are stereo centers. Now look at this carbon, fifth number. ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये एक CH3 के साथ कनेक्टेड, ये पहला हो गया, ये OH हो गया। इसको हम एक कंप्लीट ग्रुप करके कंसिडर करते हैं। तो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 करके ये एक ग्रुप हो गया, एंड दिस इज अनदर कंप्लीट ग्रुप। ओके, सो यहाँ पर हमें एक कहीं तो भी एक असिमेट्रिक कार्बन की गुंजाइश दिखती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 6, तो 6 में भी हमें दिख रहा है, बट when we have double connectivity, it means that it is connected with C and C. So C and C means they are same group, they are considered as a same group. So this is not a chiral center. Okay, now in this linealule, this is, which one is the carbon center? Yes, the fifth is the carbon center. आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो and then identify it. All right. Then moving to the next molecule again. Now this is a cyclic molecule, 1,2 epoxy propane. Propane means it is a 3-membered ring. A chirality center can be a part of. Now अभी तक हमने जो है वो सिंपल हमने देखे हैं। अभी नाउ वी आर गोइंग टू सी इन द रिंग ऑल्सो देयर आर द कायरल सेंटर्स। नाउ विच वन इज द कायरल सेंटर? इसमें देखो अभी 3 कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें से कौन सा कार्बन जो है जो कायरल बताएगा हमें? ये कार्बन is achiral because connected with 2 hydrogens. This is also achiral. This carbon is also achiral because connected with 3 same carbon atoms. But when we look at this C, this is connected with H, CH3, CH2 and O. So this is a one. So here I have mentioned it is connected with H. So how can you read the molecule in the ring? That is a chiral molecule. So you have to read this molecule like this. So this is connected with H, this is connected with CH3, and you have to consider this complete connectivity. Please remember. Okay. Now if this I have considered this connectivity, means this carbon is connected with OCH2. Okay, because this O is not independent. This is connected with something else. So this is OCH2. All right. And then the fourth connectivity, this carbon is connected with this CH2. But this CH2 is again connected with oxygen. So the fourth connectivity is CH2O. Understand how can you read this molecule, or how can you identify the substituents, or how can you identify the connectivity? If the molecule is in a ring form, समझ में आ रहा है आपको कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके साथ जो कनेक्टिविटी है साथ, हाँ, यस यस, यू अंडरस्टैंड? यस मैम। नहीं, कोई तो भी किसी लड़के ने कुछ तो भी बोला। हु इज दैट? यस, समझ गया। समझ गया। ओके, तो समझ गया बोलना है तो जस्ट फास्ट बोल दो ना, इमीडिएट, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊंगी। So this is again another molecule, that is a
limonene. So here identify the chiral center. Which one is the chiral center? Now again, look at this carbon. This carbon is connected with CH3 and CH2, but it has double bond. It has double bond. अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये होता है it has the same connectivity. Mean C is connected with one C and another C. Okay, so the two same carbon atoms are represented over here. So we cannot consider in the chirality. The first thing is it should be sp3. For the chiral molecule it should be sp3. ठीक है, sp2 carbons are not considered as a chiral molecule. ये आपको पहले ध्यान में रखना है. अभी कनेक्टिविटी की बात छोड़ दो. तो जहां कहीं डबल बॉन्ड दिखता है वहां आपको ये छोड़ देना है कि नो दे आर नॉट, बिकॉज sp2 and sp molecules they are not considered in the chirality. All right, now look at this carbon. It is connected with two hydrogens, so again it is a O-chiral. This carbon is also O-chiral, connected with two hydrogens. This carbon is also O-chiral, connected with two hydrogens. This carbon is also O-chiral because connected with three types of same carbon hydrogen atoms. Now look at this carbon atom. Look at this carbon atom. One is connected with H, other is connected with this complete group, that is the C and whatever is the, and the other is connected with, yes. अब यहाँ पर देखो ये कुछ सेम सा दिख रहा है ना? ये जो मॉलिक्यूल है सेम दिख रहा है, लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इट इज कनेक्टेड विथ CH2 एंड दिस इज कनेक्टेड विथ CH विथ डबल बॉन्ड. ठीक है, समझ में आया आपको? यस मैम. हाँ. यस मैम. अगर हमें यहाँ पर सेम दिखता है तो हमें आगे की कनेक्टिविटी भी देखनी है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी. ठीक है, यहाँ पर हमें सेम कनेक्टिविटी है, CH2 यहाँ पर भी है, CH2 यहाँ पर भी है. तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड वी जस्ट आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल. आगे हमें पता चलता है कि ये CH2 से कनेक्टेड है और यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड C से कनेक्टेड है. ठीक है ना? सो द it means that this is another group and this is another group. We have to only show the connectivity. ठीक है, the complete molecule पे हमें कोई ये नहीं है. सेकंड पोजीशन पे अगर सेम मिलता है तो थर्ड पोजीशन देखो, थर्ड पे मिलता है तो फोर्थ पोजीशन देखो, ऐसे करके. अगर पूरी पोजीशन, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो इस, अगर ये सपोज डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ओ-chiral होता. समझ में आया आपको? बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिकल वन. ऑल राइट, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी है ये कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है ना? CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3, तो एक जैसी कनेक्टिविटी देता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड दिस कार्बन बिकम्स द chiral molecule. नाउ लेट अस सी द कनेक्टिविटी. यहाँ पर भी कनेक्टिविटी जो ये बताई है, ब्लू वाली कनेक्टिविटी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की है, ग्रीन वाली कनेक्टिविटी है ये राइट हैंड साइड की है, और ये जो कनेक्टिविटी है ये वाली है जो नीचे दी हुई है. समझ में आया? सो विच वन इज द स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर? दिस कार्बन इज द स्टीरियोजेनिक सेंटर. ऑल राइट, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, बट दिस इज आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज अब इसमें बताइए वेदर इट इज अ chiral और अ-chiral. Chiral. Chiral. It is a chiral because the hydrogen is replaced by deuterium and the tritium. So they are isotopes and everything is different. So this molecule is a chiral molecule. All right.
अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, इमीडिएट आप उसको सॉल्व करो। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस। Yes, ma'am. Okay. So draw the mirror image of Yes, each ma'am. compound. Label each molecule as a chiral or achiral. आप मिरर इमेज ड्रॉ करिए एंड आप दोनों के मिरर इमेज के एंड दी ओरिजिनल मॉलिक्यूल के आप स्टीरियो सेंटर्स और कायरल सेंटर्स आप आइडेंटिफाई करिए एंड आप मुझे बताएंगे कि विच कंपाउंड्स आर एनेंशियोमर्स, विच कंपाउंड्स आर डायस्टीरियोमर्स। 2 मिनट कम तो 5 मिनट ले लो, लेकिन इसको जरूर सॉल्व करो, ठीक है। एंड देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन and you can check the whether they are correct or not. Yes, done. Yes. Done. Done. Okay. Okay. How many people? All these students they have done? Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. So let us check. We have the answer also. So this is the first answer. This is the first answer. That this is the achiral because we got the superimposable and the identical. Okay. कितने लोगों का सही आया? Okay. Then moving to the next. All are for different substituents. So this is the chiral center because the mirror images are non-superimposable. So they are enantiomers. They are enantiomers. All right. तीसरा क्या है? तीसरा क्या हो सकता है? Achiral. Okay. Achiral because they are superimposable and identical. And the fourth one is chiral, non-superimposable.
ऑल राइट, सबका सही आया आंसर? Yes, ma'am. मैक्सिमम लोगों का सही आया, गलत नहीं किया Yes, ना? ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट, ड्रॉ द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच मॉलिक्यूल, करो, ये कल मैंने सिखाया था। चलो आंसर देखो, अभी चेक करो या लिख लो साइमल्टेनियस। कैन यू सी द प्लेन? यस, Yes, ma'am. so there is one Yes. possible plane of symmetry, okay, passing through the plane, okay. दिख रहा है सबको? हाँ, प्रॉब्लम लिख लो। Yes, ma'am. अगर जिनका जिनका सोल्यूशन नहीं आया तो अभी मैं आंसर बता रही हूँ, इमीडिएट आंसर भी लिख लो, ठीक है? हो गया सबका लिखना? यस, लिखो जल्दी जल्दी। सेकंड सेकंड अपने आप सॉल्व करो, ट्राई ट्राई करो, कोशिश करो सॉल्व करने की। So this is the answer. So only one plane of symmetry you can see over here. ठीक है? कितने लोगों ने सही किया? चलो थर्ड, again there is a plane of symmetry. ठीक है, so this is a such type of questions may ask you in the examination also. So you will be able to draw the plane of symmetry, or some may ask the center of symmetry also, or the axis of symmetry, etc., etc. All right. Now moving to the next, symmetry in achiral structures. अभी तक हमने कायरलिटी की बात की, लेकिन अकायरल ये क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ द वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। ऑल राइट, सो सिमेट्री टेस्ट फॉर द अकायरल स्ट्रक्चर्स, ओके। Any molecule with the plane of symmetry or a center of symmetry or axis of symmetry or alternating axis of symmetry, make them achiral. समझ गए आप? Any molecule which has a center of symmetry, axis of symmetry, plane of symmetry, or alternating axis of symmetry, such molecules are achiral molecules. They cannot be a chiral one. They are achiral. ठीक है? Now this is the molecule that chlorodifluoromethane. The plane of symmetry, that is it is cutting vertically to the molecule and getting the mirror images. So that's why this molecule is the achiral molecule. ठीक है? Because it has a plane of symmetry. मैं इसको थोड़ा फास्ट लेके जा रही हूँ क्योंकि कल हमने ये काफी चीजें देखी हुई थी। Am I going go fast? Yes. Yes, ma'am. चलेगा. Yes, ma'am. Okay. अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू टू मिरर, और इसको अभी हमने हॉरिजॉन्टली कट किया है। ठीक है? अगर हम स्ट्रेट कट करते तो वी डोंट गेट एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो हमने इसको ऐसे, कैन यू सी मी? Yes, ma'am. ओके, तो मेरा हाथ देखो, मैंने इसको ऐसे काटा है, हॉरिजॉन्टल काटा है मॉलिक्यूल को। ठीक है? सो दैट आई एम गेटिंग टू मिरर इमेजेस, equal halves. Okay, and that's why the plane of symmetry is there.
All right. Looking this molecule that they it looks like अगर हम ऐसे ही before applying the symmetry elements अगर molecule को हम ऐसे ही देखते हैं तो क्या पता चलता है आपको कि ये molecule asymmetric है या chiral है ना, है कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, लेकिन when I cut it as a horizontal, so the plane of symmetry is present because cutting horizontally will also give you the mirror image. ऊपर एक है जैसे बॉल को हम बीच में से कट करते हैं वैसे ये सारे बॉल्स है, ये बॉल्स को हमने ऐसे बीच में से कट कर दिया है तो आधा बॉल ऊपर है और आधा बॉल नीचे है. ऑलराइट, सो mirror images are there, so plane of symmetry is present in the molecule, so that's why this is achiral. Okay, now moving to the next. If any center of symmetry is present, so this is the center of symmetry. So this is a center, this is a center, and what was the hypothesis that from the center to now this is at the above the plane. ठीक है, draw a line. So I am drawing a line from this substituent to center and I am extending to the back of the plane. So what I am getting, there are two same substituents present equidistantly. All right. Again, I am drawing the line from this substituent to center and then I am extending towards the lower side. And what I found that there are two same substituents. There are two same substituents. All right. So that again, considering these two red substituents, so if I draw a line from this red to the center and I am extending to the back side, again I am getting the same appearance of the same molecule. So the center of symmetry is present. So that's why the molecule is achiral. The molecule is achiral. समझ में आया? Now if you see that this carbon, if you see this carbon, okay, so it looks like that it is connected with different atoms, but it shows a center of symmetry, and that's why because of the center of symmetry the molecule is achiral. समझ में आया आपको? So in general हम summarize करते हैं. In general a molecule with no stereogenic centers will not be a chiral. इन जनरल हमें ये पता है कि अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर वो मॉलिक्यूल के पास नहीं है तो वो अकायरल हो सकता है. ठीक है. दूसरा एक क्राइटेरिया हो सकता है विथ वन स्टीरियोजेनिक सेंटर अ मॉलिक्यूल विल बी ऑलवेज कायरल. ठीक है. अब कायरलिटी की बात और ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात टोटली डिफरेंट है, प्लीज ध्यान में रखो. ठीक है. कायरल मॉलिक्यूल हो सकता है लेकिन कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है ऐसा नहीं है. ये हमने लास्ट हाइपोथेसिस लास्ट फ्यू लेक्चर्स हमने देखा. इट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट्स, दे आर एक्टिंग ऑन द what we can say the optical activity. So optical activity and the chirality, they are something different. We cannot directly correlate with them. All right. So the stereogenic center, genic centric molecule can be a chiral molecule. Okay. With two or more stereogenic center, a molecule may be a chiral, may not be a chiral. Confuse हो रहे हैं क्या आप लोग? Yes. No, ma'am. देखो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर है ही नहीं.
जिसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, डेफिनेशन क्या है स्टीरियोजेनिक सेंटर की? कनेक्टेड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स। ठीक है, अगर ये ही नहीं है तो वो कायरल हो नहीं सकता, वो अकायरल है। ठीक है, और जिसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो मॉलिक्यूल कायरल है। तीसरा एक कैरेक्टरिस्टिक है, अगर मोर देन 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर जिस मॉलिक्यूल के पास है, that may be a chiral or may not be a chiral. That may be a chiral, that may not be a chiral. ठीक है, यस मैम। क्योंकि उसके साथ सिमेट्री एलिमेंट भी चलता है, ये आप हमेशा ध्यान में रखो। ठीक है, achiral molecules usually contain plane of symmetry, but the chiral molecules do not. This is the very important statement. Okay, achiral molecules always contain a plane of symmetry, but chiral molecules do not contain plane of symmetry. And the last one, a plane of symmetry is a mirror plane that cuts the molecule in half so that half of the molecule is the reflection of the other half. All right. So you can take a screenshot of this slide because this is a very important aspect of the chirality and the o-chirality. All right. So moving to the next, फिर से इसको थोड़ा सा इलेबोरेट किया हुआ है। इसको हमने, ये मॉलिक्यूल है, इसको मैंने फिर से कट करके इलेबोरेट किया है। तो वेदर दिस इज कायरल और अकायरल? यस, अकायरल। अकायरल है, क्योंकि इसको कट करने से 2 इक्वल हार्फ्स मिलते हैं। ठीक है, सो दिस मॉलिक्यूल इज इट हैज 2 आइडेंटिकल हार्फ्स, सो इट इज अ अकायरल वन। और ये मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल कायरल। chiral, yes, Chiral. because no plane of symmetry is Plane of symmetry. okay, so that's why this is a chiral one. अब कनेक्टिविटी के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे, हम लोग सोच रहे सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। ओके, सो द समरी ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कायरलिटी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो एवरीथिंग हैज अ मिरर इमेज. The fundamental question is whether the molecule and its mirror images are superimposable. If molecule and its mirror images are not superimposable, the molecule and its mirror images, they are chiral. Then the stereogenic center, this term is also involved. तो इस प्रकार से स्टीरियोजेनिक, अब इसमें से सिर्फ 3 चीजें हमें की पॉइंट्स है। एक तो है सुपर इम्पोजिबिलिटी, दूसरा है स्टीरियोजेनिक सेंटर, और तीसरा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑलराइट, these are the 3 key words for the chirality and the achirality of the molecule. So moving towards the center now, स्टीरियोजेनिक सेंटर, अभी कायरलिटी की अगर हम बात करते हैं, सो वी हैव टू look at the stereogenic centers. We should be very serious about the stereogenic centers, and we should be in a position to locate the stereogenic centers. The first thing is the stereogenic centers, they are the tetrahedral carbon, means that carbon should be a sp3 hybridized. Okay, so इफ जो कार्बन sp3 नहीं है उसको आप वैसे ही ओमिट कर दो, उसको आप वैसे ही निकाल दो कि नहीं भाई ये कोई स्टीरियो सेंटर नहीं हो सकता। ठीक है, then look at the center and then look for the connectivity, whether they are it is connected with the 4 different atoms. All right, so connectivity and the structure, sp3 carbon and the connectivity, these are the only 2 points should be considered in the stereogenic centers. So CH2 and CH3 तो आपको वैसे भी ओमिट करना है। ठीक है, क्या क्या आपको ओमिट करना है? CH2 ग्रुप ओमिट करना है, CH3 करना है, और एक चीज मैंने आपको बताई sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन करना है ओमिट, एंड sp2।
तो जिस if there is a very big molecule and if such molecules they contain this type of connections, CH2 का connection है या CH3 का connection है या sp का connection है या sp2 का connection है, तो आप ऐसे कार्बन को immediately omit कर दो, वो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हो ही नहीं सकते। ऑलराइट, तो ऐसे टेट्राहेड्रल कार्बन्स आप सिलेक्ट करो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और फिर उसकी कनेक्टिविटी विद डिफरेंट sp3 के साथ उसकी कनेक्टिविटी। अब sp3 की आप ये भी बोलोगे कि मैडम ये CH2 है, नो, द again the next point, look for the 4 different atoms, that is the connectivity is also equally important. All right, so this is again this is which one is मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। so can you hear me? यस Yes, मैम, ma'am. राइट। Yes, क्या ma'am. आवाज नहीं आ रही है? ये जो मॉलिक्यूल आप समझा रहे थे तब से। अच्छा, ये वाला मॉलिक्यूल समझ में आया? नहीं मैम, कभी भी नो नहीं मैम, आ तब रही। से। ओके, ये जो है मैंने ठीक है, ये वाला एक्सप्लेनेशन वो टाइम पे था वॉइस। यस यस मैम। मैम। ओके, और ये मॉलिक्यूल जब मैंने दिखाया तो नहीं था। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर दिखाना है। सो दिस इज अ स्टीरियोजेनिक सेंटर, दिस इज अ स्टीरियोजेनिक सेंटर। Then moving to the next molecule, this carbon. All right, this carbon is a stereogenic center. Okay, सिर्फ मुझे आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर दिखाना है, क्योंकि दिस कार्बन इज कनेक्टेड विथ हाइड्रोजन Br, CH2, CH2, CH3 and CH2, CH3. So two different alkyl groups are present. So this is a stereogenic center, 3-bromohexane. All right. Apart from that, if the molecule is big, you can also take the screenshot and you can also note down such type of molecules, because many of them are the either they are what we can say the medicines or drugs, etc. So this is a simple sugar molecule fructose. This is a ephedrine, act as a bronchodilator, and this is a Darwin, which is an analgesic. So here there are different carbon atoms which are they are showing as a stereogenic centers. If there are more than one stereogenic centers, so you should be able to identify the stereogenic centers. Okay, so either you can take a screenshot or you can note down in your notebook if there are more than one stereo centers. Can you hear me? यस यस मैम। मैम। यस मैम। Okay. Now moving to the next these things again, stereogenic center, ये slide मैंने अच्छे से आपको explain की है. This is a 2 hydroxy butanol. Okay, this I have explained in the earlier slide. So I think there should stereogenic center आपको पता है, ये 2 stereogenic center है. Now again stereogenic centers 3-dimensional. So again, this is a leucine amino acid. So we know that our body is completely made up of enantiomers,
diastereomers, and they only understand the language of handedness, right hand side, left hand side. Why? Because of the all the DNA, RNA, they contain the chiral compounds. All the amino acids, they are chiral amino acids. So please remember. So this is a leucine, the structure of leucine, where uh, these are the enantiomers. So draw a structure of leucine, put a mirror image over here, and you can draw the enantiomers and correlate these two. Now, if there is any question, so there is a such type of question that there are two mirror images, and the question is correlate these two structures with each other. So the answer is, how can you correlate these two structures? You just find out whether the structures are superimposable or not. If they are superimposable, what can we say that they are a chiral molecule. If they are superimposable, they are a chiral molecule, and they are just isomers. Okay, but if they are mirror images and they are non superimposable, they are definitely enantiomers. So that is the correlation of compound A and compound B. Suppose this is A and this is B. So this is the story about the leucine or amino acid. That is the chirality. Again, you have to identify the chiral center. यहाँ पर मैंने already star mark किया हुआ है जो chirality बताता है. So in all the molecule, if any star is there, that indicates that this carbon, that particular carbon is stereogenic center. All right. So star denotes the chirality. Understand? The next is the 3-bromohexane. Okay. Now in the again 3-bromohexane, if I draw two structures, and again my question is correlate these two structures with each other. So answer is they are enantiomers. How can I say that they are enantiomers? Just draw just check the another structure is a mirror image. If it is a mirror image, then go for the second criteria, that the mirror images should be non-superimposable. If they are non-superimposable, then they are definitely enantiomers. All right. Okay. So the all stereo centers I have shown over here. So this is the at a glance two structures for the stereogenic centers. All right. Then moving to the next slide. इसको मैंने डिलीट नहीं किया, वो इस स्लाइड में आपको बता रही. ओके, नाउ अगेन विद this structure. Now this is in a ring form. Now is the C1 is a stereogenic center. अभी इसको आप मत देखो, पहले इसको देखो. C1 stereogenic center है क्या? नहीं है. नो. ऐसा स्ट्रक्चर हमने कहां पर देखा था? लिमोनिन में, है ना? लिमोनिन में मैंने बताया था कि अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर जो है ये अकायरल होता. डबल बॉन्ड की वजह से लिमोनिन ये कायरल सेंटर बता रहा था. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड पुट अप करती तो क्या ये कायरल होता? यस, है ना? क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ होती और इसकी कनेक्टिविटी CH2 होती. ऑलराइट, लेकिन अभी यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी जो है यहाँ से भी सेम है और यहाँ से भी सेम है, and that's why there are two identical groups equidistant from C1. So no, C1 is not stereogenic center. देखो दिखने में ये कायरल दिख रहा है ना, स्टीरियोजेनिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एट ए ग्लांस? अरे भाई हाँ के नहीं से हाँ के नहीं बोलो, मैं आगे बढ़ती हूँ. ओके,
So look at this C3. Okay. So this C is connected with CH2 double bond CH. This is connected with CH2 CH2. Other is H and CH3. So this is a stereogenic center. ठीक है. ऐसे कई क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको इसमें, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यूज में आएगा. ऑलराइट. तो ऐसे छोटे छोटे जो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब इसमें भी देखो, अभी ये यहाँ पर मैंने आंसर दे दिया है. सो दिस इज अ मॉलिक्यूल. गो विथ मिरर इमेज. मिरर इमेज देखने के बाद आपको चेक करना है वेदर दोज मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोजेबल आर नॉट. अगर सुपर इम्पोजिबल है तो एनांशोमर्स हो सकते क्या? नहीं. नहीं. अगर so they should be non superimposable. So they are non superimposable. So finally they are enantiomers. All right. अब देखो ये कुछ ड्रग्स है. पैक्लिटेक्सेल है या फिर सुक्रोज है या फिर एंटीनोशिया ये वाला ड्रग है या टेराटोजिन है. सो ऑल दे आर मैक्सिमम ड्रग्स दे आर हैविंग स्टीरियोजेनिक सेंटर्स. ठीक है. मैक्सिमम ड्रग्स में ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं. हमारे बॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं इसका मतलब क्या है? हमारे बॉडी में देयर आर सो मेनी एंजाइम्स and those enzymes are also, they only recognize the right hand side and the left hand side. So they only recognize the stereogenic centers because they have stereogenic centers. All right. So chirality is the most important aspect in many drugs. All right. So many drugs, they possess the chirality. ठीक है. दिस पैक्लिटेक्सॉल इज, आज भी पैक्लिटेक्सॉल को कोई जवाब नहीं है. आज भी टेक्सॉल को ही एंटी कैंसर ड्रग करके यूज किया जाता है फॉर वेरियस कैंसर्स. ओके. आज भी इसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसके जैसा कोई ड्रग नहीं है. ठीक है ना. सो और ये ड्रग जो है ये एक इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है. ठीक है. उसके लिए उसको पद्म भूषण मिला. कौन साइंटिस्ट है ये आप गूगल करके देख लेना. ठीक है. बट आई मेट दैट साइंटिस्ट, मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप गूगल करके देख लेना. ऑल राइट. चलो इसको अभी सॉल्व करो. दिस इज द locate the stereogenic center in each of the following molecule. पहले ड्रॉ करो मॉलिक्यूल एंड ट्राई टू लोकेट द स्टीरियोजेनिक सेंटर. ठीक है. इसको मैं 5 मिनट देती हूँ. अभी 2:22 हुए हैं, तो 2:27 में मैं आपको पूछूंगी.
ऑल राइट, हो गया सबका? Yes, ma'am. ओके, Yes, चलो. ma'am. सो दिस इज द आंसर. This is the first group, this is second group, this is third group, and this is the fourth group. And which one is the stereogenic center? This one is the stereogenic center. And this is a bronchodilator, albuterol. This is a albuterol. So maximum molecules possessing chiral centers, they are very biologically active compounds. And the next is, मैंने स्ट्रक्चर भी ऐसे ही दिए थे कि आपको इजीली पता चलता था, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं थे, है ना? है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. this is also antihistamine, and these are the two stereogenic centers. Okay, चलो अभी इसको सॉल्व करो, इसके स्टीरियोजेनिक सेंटर्स निकालो. अभी और 5 मिनट देती हूँ. ठीक है, अभी कितने बजे? 2:30 बजे है. सो 2:35 को, ठीक है, 5 मिनट में फिर से सोल्यूशन. ऑलराइट, करो.
All right. Done? Okay. Yes, ma'am. So Yes, the ma'am. Yes, ma'am. so the first answer is these are the two centers, chiral centers. Okay, for the first solution. The second one is again there are two carbon atoms which are chiral centers. And what is the third one? That is a fructose. So these three are the carbon centers. All right. Okay. Now these are the five examples. Yes, ma'am. हाँ, अभी इसको सॉल्व करो 5 more minutes. अगर हो जाता है तो मुझे प्लीज कम्युनिकेट करो तो ताकि मैं फिर आगे बढ़ूंगी. ओके.
Okay, done. Okay. Yes, ma'am. So let us have an answer for first. One stereo center. Okay. Yes, ma'am. For second. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Third. Okay. बराबर है या सही है या गलत है? ये वाला सेंटर यहाँ पर होना चाहिए ख्याल से, है ना? Yes, ma'am. हाँ, ये गलती से यहाँ लग, हाँ, ये यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर, ठीक है? यस, Yes, ma'am. ओके. विटामिन के, Yes, ma'am. ओके. देन द लास्ट वन, मैनोज. नेक्स्ट वन, इसको देखो. लोकेट द स्टीरियोजेनिक सेंटर. अब थोड़ा सा एंड ड्रॉ द एनिशोमर्स, ठीक है? इसके लिए 2 मिनट. Okay, done? Yes? Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, this is the solution for the first molecule. Make it tetrahedral and mirror image. One stereogenic center, mirror images, non-superimposable, so they are enantiomers. All right. And what about the second molecule? Again, for the second molecule, this is the stereogenic center. One stereogenic center, mirror images, non-superimposable, and they are enantiomers. So this is the answer. Okay. Okay. So this is the last
item of this, and then we'll have two more slides, and then we'll stop over here today. Okay, इसको solve करो अभी. All right. So let us have an answer solution for this. So check your answer properly. कितने लोगों का सही आया? Yes. तो नहीं गए सब? जागो, उठो. हेलो. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. जाग रहे Yes, सब. ma'am. Okay. So this is the last regarding the problems. Two more slides we can see, then we'll stop over here. Okay. The first slide is isomer, as we know that the same molecular formula and the same connectivity, no identical. Now look at this flow chart first. You can have the screenshot of this slide also. So the flow chart of the isomer tells you that there is a some same molecular formula different in some way. Okay. If there is the same molecular formula, if they are different in a some way means some connectivity or connection with the other atoms. So they are isomers. Okay, they are isomers. If isomers have same connectivity, if answer is yes, they are stereoisomers. Okay, if they are having same molecular formula but they have different connectivity, or
say if there is any connectivity. If answer is no, then the isomers are constitutional isomers. Okay. Now, in this particular unit, we are going to discuss the stereoisomers. Just for the sake of knowledge, we must know the constitutional isomers. So the stereoisomers are different by rotation, means the spetal arrangement जैसे मैंने पहले भी discuss किया है. So only because of the spetal arrangement around the CC bond. So CC sigma bond is there basically, and the arrangement of the atoms or the molecules or the functionalities or the groups, they are differently situated in the space or with the different angles that makes them stereoisomers. Okay, now if the rotations are different about the single bond, if yes, they are conformational analysis, conformational isomers. If no, they are configurational isomers. In configurational isomers, if they are mirror images, yes, they are enantiomers. If they are not mirror images, they are diastereomers. One more point I would like to add, that is the mirror images are non-superimposable. All right. Uh, then this is the most important slide regarding the isomers, that the constitutional isomers here. These are the constitutional isomers. So here the details about the constitutional isomers and the stereoisomers we will see later on. So the constitutional isomers, they are divided into three types. The first type is the structural isomers, positional isomers, and the functional isomers. Now, if you see the structural isomers, it means that they have different connectivity. All right. So this is the molecular formula is same, but the functional groups are different, or there might be a different connectivity. Here, this CH3 is connected to the last CH2, and here this CH3 is connected with the second position. So the structure is different. Okay. And what about the positional isomers? Here, it is with respect to the toluene. So this toluene is CH3 and it is present at the second position. Here it is, but the molecular formula is same, only the position is different. Here also the position and the structure is also different. Now here the different functional groups. Okay, here the molecular formula is same, but the functional groups are different. Here you can see that there is a benzoic acid or COH group, and here you can see that it is a benzaldehyde, 2-hydroxybenzaldehyde. All right. So depending on the functional group, here they may have same molecular formula, but the functional groups are different. So these are the functional group isomers. So I think we should stop over here, because lot of things we have discussed today. Uh, so shall we discuss only this, the last slide? Are you ready? The types of stereoisomers. You can have the screenshot of this molecule, this particular slide. करें एक्सप्लेन या फिर कल? कल कल, ओके. हाईली टॉक्सिक है ना आज का क्लास? हाईली टॉक्सिक, though it is a stereochemistry, but this is highly toxic. You feel so?